Again, the good morning to one and all. Now we have to continue with the physical. Yesterday we started with the new unit number 4, that pertaining to the surface chemistry. We have seen the terms, then adsorption isotherms, different types of this adsorption isotherm. The 5 types yesterday we have seen. Now अभी जो कुछ एडसॉर्प्शन आइसोथर्म है, जैसे कि कोई तो साइंटिस्ट ने स्टडी किया रहना चाहिए, तो हियर द वन क्वेश्चन वाज अ पॉपुलर दैट discuss the Langmuir adsorption isotherm, or write a note on Langmuir adsorption isotherm. Langmuir is a name of the scientist who proposed the theory of the adsorption of the gases on the solid, and for the okay. Langmuir proposed the theory of adsorption of gases on the solid is known as Langmuir adsorption isotherm. Okay, इसे यूनिमोलिकुलर एडसॉर्प्शन आइसोथर्म भी कहा जाता है. Okay, it is also termed as unimolecular adsorption isotherm. Okay, now we have to talk about assumptions. पहला है अभी केमिस ऑप्शन. आयन में केमिस ऑप्शन मतलब क्या है कि सरफेस पे केमिकल बॉन्ड फॉर्म होने वाला है, इज फॉर्म बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द एब्सॉर्बेंट एंड एब्सॉर्बेट. ये ध्यान में रखना है. सिंस द इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस फॉल ऑफ रैपिडली विद द डिस्टेंस, then adsorb layer are not likely to be more than one molecule layer in thickness. ये पहला assumption है उसका. क्या assumption है कि मोनो लेयर फॉर्म होता है, मल्टी लेयर फॉर्म होता नहीं. The adsorb layer on the solid adsorbent is assumed to be unimolecular in thickness. This however is true for adsorption at low pressure or at moderately high temperature. ये ध्यान में रखना है, AMCQ का आएगा. The rate of adsorption is proportional to the unoccupied surface area of the adsorbent. Okay, the rate of adsorption of a gas molecule is also proportional to the pressure of the gas at constant temperature. The process of adsorption is dynamic process which consists of the two opposing processes. पहला क्या है? Molecule of the gas get adsorb on the surface, that is a condensation or adsorption process, and second, adsorb molecules leave the surface, that is the evaporation or desorption process. Okay, of adsorption becomes equal to absorption. The process attains the equilibrium which is called as adsorption equilibrium. ये आपको MCQ में आ सकता है. Adsorption takes place on the fixed site and there is no interaction between the adsorbed molecule and the surface. One side adsorb are one molecule. When the whole surface is completely covered by the unimolecular layer of the gas, further adsorption is not possible. It indicates the maximum saturation of by unimolecular layer is considered here. Multi-molecular layer is not formed. The gas under study behaves ideally. On the basis of the above postulates, Langmuir deduced the equation expressing a quantitative relation between the pressure and the amount of the gas adsorbed at a constant temperature is called as Langmuir adsorption isotherm. Consider the unit area of an adsorbing surface exposed to the gas molecule of the gas while strike the surface and get adsorbed, while other molecules retain to dissolve or evaporated from the surface. अभी देखो यहाँ पे दिखा है आपको adsorption of a gas on the unit surface area. Let theta be the fraction of the total surface area covered by the adsorbed molecules at any instant. The fraction of the surface area not covered by the adsorbed molecule is 1 minus theta. Theta क्या है कि covered किया है molecules ने और ये uncovered area है. Rate of the adsorption of the gas is directly proportional to
1 minus theta into P. That is the rate of adsorption of the gas is equal to K into 1 minus theta P. Rate of dissolution of the gas is directly proportional to theta. That is the rate of dissolution of gas is equal to K dash theta. At adsorption equilibrium, the rate of desorption is equal to rate of adsorption is equal to rate of desorption. तो हम कंपेयर करेंगे K 1 minus theta P is equal to K dash theta. ओके, यहाँ पे हम क्या करेंगे, दैट इज अ Kp minus Kp theta. You can made the suffix P. यहाँ पे P सफिक्स करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्रेशर है. ओके, then Kp minus Kp theta is K dash theta. Kp is equal to Kp theta plus K dash theta. Theta is equal to, मतलब थीटा कॉमन लेंगे, Kp plus K dash. Therefore theta is equal to Kp by Kp. यहाँ पे आपका Kp as it is रहेगा. Okay. Then theta की वैल्यू मिल गई. On dividing the numerator and the denominator of the RHS of the equation by K dash, gives, आपको K dash से क्या करना है, राइट साइड को डिवाइड करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में. तो K dash जहाँ पे रहेगा दैट विल लेफ्ट, तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या, थीटा इज इक्वल टू K अपॉन K डैश इंटू P डिवाइड बाय 1 प्लस K अपॉन K डैश इंटू P, बट B इज इक्वल टू K अपॉन K डैश विच इज एडसॉर्प्शन कोएफिशिएंट. B इज इक्वल टू K अपॉन K डैश. B यहाँ पे पुट अप करेंगे, B इंटू P डिवाइडेड बाय 1 प्लस B इंटू P. इफ द V इज द वॉल्यूम ऑफ द एडसॉर्ब per unit mass of the adsorbent and Vm is the volume of the gas required for the formation of a single layer over the adsorbent, then theta is equal to V upon Vm. On substituting equation number 3 in equation number 2, you will get V upon Vm is equal to B into P divided by 1 plus B into P. Equation 2 and 4 represent the Langmuir adsorption. Equation 4 can be rearranged as P by V. अभी ये P है, यहाँ पे V लेंगे. ओके, इसको V से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद V प्लस ओके, P by V is equal to V upon Vm plus 1 upon B into Vm. Just I am confirming it is the correct. Okay. P by Vm चाहिए पे P by Vm plus 1 upon B into Vm. A graph of P by V against a P should be a straight line with the slope 1 upon Vm and intercept 1 upon P by V वर्सेस P का ग्राफ निकालेंगे तो स्लोप आपको 1 upon Vm मिलेगा और इंटरसेप्ट 1 upon B into Vm और से Vm into B ग्राफ दिखा है. Langmuir adsorption isotherm equation 4 assume different forms under the different condition. At a very low pressure, the term B into P in equation 4 becomes very small compared to the unity. Hence, equation 4 reduced to B is equal to Vm into B into. Okay.
Okay, that is the volume of the gas at top is directly proportional to the pressure. At very high pressure, the term V into P in equation number 4 becomes very large compared with the unity. Hence, equation 4 reduced to V is equal to Vm. Okay, that is the volume of gas at top is constant and independent of the pressure. That you have to remember. ये MCQs के लिए important है. ये जो है that is important for the MCQ. As far as the MCQ concerned, this part is very much important. ये बीट इक्वेशन जो है, अभी लैंगमोर की कोई जैसे कि उसे हम कहेंगे ड्रॉबैक्स है. लैंगमोर इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द मोनोलेयर फॉर्मेशन. देखो ये क्या फंदा है दैट यू कैन रियलाइज. अभी अगर प्रैक्टिकल होता तो आपको पता चलता था अच्छे से, तो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ. आई एम ट्राइंग टू सॉल्व योर क्वेरीज. आप बोलेंगे क्या चल रहा है. अभी लैंगमोर ने क्या स्टडी किया है कि जैसे कि एब्सॉर्प्शन होता है, आपको पता है कि हम रूम फ्रेशनर हमारे इधर रखते हैं, बराबर है. जैसे कि घर में लगाते हैं रूम फ्रेशनर हो या एयर बैग वगैरह रहती है. अभी एयर बैग का काम क्या रहता है कि एक फ्रैग्रेंस देना, बराबर है. तो वो क्या करता है, फ्रैग्रेंस देता है. तो उसमें जो मटेरियल जो है वो क्या करता है, आने वाले एयर का उसके साथ में आने वाले गैसेस उसके साथ इंटरेक्ट होते हैं, उसके सरफेस के ऊपर एडसॉर्ब होते हैं, और वहां से क्या होता है, रिलीज ऑफ द अनदर थिंग इज गोइंग ऑन में. तो ऐसे ही जब हम गैसेस की बात करते हैं, जैसे कि पॉल्यूशन कंट्रोल करना होता है हमें, तो ये सरफेस केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि पॉल्यूशन में आपको पता है कि हर तरह के गैस उसमें रहते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, और ढेर सारे अलग अलग तरह के गैसेस है. तो ये गैसेस को हमको कंट्रोल करना है, हमें पॉल्यूशन कंट्रोल करना है. तो एट दैट टाइम इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि उसका एब्सॉर्प्शन होना चाहिए. एब्सॉर्ब नहीं होना चाहिए. क्या होना चाहिए, एब्सॉर्ब होना चाहिए. एब्सॉर्ब इसलिए होना चाहिए कि सो दैट वी कैन utilize it for the we can remove that gases very well and very easily. हम उसको आसानी से क्या करेंगे, उसको रिमूव कर सकते हैं और उसको हम एलिमिनेट कर सकते हैं. ओके, तो अभी मोनोलेयर लैंगमोर जो है इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द मोनोलेयर फॉर्मेशन. उसने क्या किया कि जो कुछ भी गैसेस एडसॉर्ब होते हैं कोई भी सरफेस पे, तो वो मोनोलेयर ही फॉर्म करते हैं, ऐसा उसका कहना है. तो ऐसा नॉट नेसेसरी ना कि दे विल फॉर्म ओनली वन लेयर ऑन दैट पर्टिकुलर एनी दैट पर्टिकुलर एडसॉर्बेंट, बराबर ना, कि कोई भी एडसॉर्बेंट के ऊपर वो एक ही लेयर फॉर्म करेंगे, ऐसा हो नहीं सकता. देयर मे बी द मेनी लेयर फॉर्मेशन ना. तो इसके लिए फिर दूसरे लोग पिक्चर में आए. 3 लोगों ने एक साथ इसके ऊपर काम किया. उसमें है तुम्हारा पहला ब्रॉनर, इमेट एंड टेलर. ब्रॉनर, इमेट एंड टेलर, जिसे कंबाइन में तीनों को एक साथ में कहा जाता है बीट इक्वेशन. वो क्या हुआ, बीट इक्वेशन. बीट इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर द मल्टी लेयर फॉर्मेशन. में मतलब मल्टी लेयर के लिए इसका यूज होता है, ये पता रहना चाहिए. अब इसके पॉस्टुलेट्स पहले स्टडी करना है. अभी जैसे कि पहला बताया मैंने कि restricted at temperature and pressure, it is very much required condition as far as the Langmuir adsorption isotherm is considered. And according to the Langmuir, multi-layer formation do not occur. उसने क्या बोला कि मल्टी लेयर फॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है. मगर ये तीनों एक साथ आए, ब्रानर, इमेट एंड टेलर, who proposed the theory that multi-layer adsorption occurs at a wide range of temperature and pressure. इन्होंने क्या बताया कि it is possible, yeah, there is a formation of the multi-layer. कहाँ पे, अलग अलग टेम्परेचर एंड प्रेशर पे. I postulate of the beat equation, the adsorb layer may be multi-molecular in thickness. पहला सबसे important उसका assumption है, पहला उसका postulate है कि जो exact लैंगमोर के अपोजिट में है. ऐसे में that you have to remember. ये आपको पता रहना चाहिए. इसके ऊपर ये जो that particular
ये एमसीक्यू में भी आता है। Then Langmuir's assumptions applies to each layer. उसके बाद में you can apply each and every assumptions whatever made by the Langmuir for the each layer. जैसे कि लैंगमोर ने कहा मल्टी लेयर फॉर्मेशन इज नॉट पॉसिबल, तो ऐसा होता नहीं है कि आप बोलेंगे कि बाबा एक ही लेयर फॉर्म कर, ऐसा होने वाला है नहीं। ऐसे में दे मे कैन फॉर्म द मल्टी लेयर, मतलब एक से ज्यादा लेयर वहां पे फॉर्म हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वेदर द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज फेवर्ड फॉर दैट। उसके लिए वो अगर फेवरेबल कंडीशन है तो मल्टी लेयर फॉर्मेशन इज आल्सो पॉसिबल। बट एक से ज्यादा जब लेयर फॉर्म होते हैं तो हर लेयर के लिए हमें assumptions यानी जो postulates है लैंगमोर ने बनाए हुए that are applicable. Okay, there is a dynamic equilibrium between the successive layer. The rate of evaporation from one layer is equal to the rate of condensation on preceding layer. Okay, the characteristic heat of adsorption, the characteristic heat of adsorption applicable to only the first layer, ये भी important है। After the first layer, the heat of adsorption is equal to heat of condensation of the vapor. The derivation is based on the same kinetics picture as prepared by Langmuir. Therefore, bit equation can be given as P upon in bracket P upon V in bracket P0 minus P is equal to 1 upon C into Vm plus C minus 1 upon C into Vm into P upon P0, which is the straight this is the line equation for the line y is equal to C plus mx, where V is the equilibrium volume of the gas adsorbed per unit mass of the adsorbent at pressure P and constant temperature. P0 is the saturated vapor pressure at same temperature. Vm is the volume of the gas required to cover unit mass of the adsorbent with the और उनको बोल बाकी के लोग को। Okay. Then C is a constant for a given adsorbent and is given by the equation C is equal to, अब C is equal to that exponential in bracket delta H1 upon delta Hm upon RT. ये exponential function है, you can take it as a E के फॉर्म में भी ले सकते हैं, there is no problem at all. Okay, where delta H1 is the heat of adsorption of the first layer, delta H heat of adsorption of all layers above the first. Above equation is in the form of y is equal to C plus mx with a positive slope, मतलब लाइन का इक्वेशन फॉलो करता है। Hence when we plot a graph of P upon V in bracket P minus P0 minus P against the P upon P0, we get a straight line with the slope C minus 1 upon C into Vm and intercept 1 upon C into Vm. ये बीट इक्वेशन है, डायरेक्ट इक्वेशन लिखने के लिए आता है। अभी ये जो बीट इक्वेशन है, इट इज एन वेरी यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया, दैट द नेक्स्ट लेक्चर। Okay, here we will stop. Thank you for joining.